Welcome back. Today we will discuss the next legume crop, that is soybean. In this lecture we will discuss about its origin, morphology, cultivation practices, diseases and its utilization. Let's start. Next comes botanical description of the soybean. Its botanical name is Glycine max. There are some English names which we are used for this pulse crop, that is soybean, or soja bean, and there are various Indian names which are used for this pulse crop, that is soybean, bhat, ram kurthi or batwar. Then it belongs to the family Fabaceae, जिसे previously Leguminaceae के नाम से भी जाना जाता था. And the chromosome number in this crop is 2 is equal to 40, that is diploid chromosome number is 40. Next come general facts. It is thought to be the native of East Asia. जो East Asia है उसका native माना जाता है इसे. So these are the countries which comes under East Asia, like Japan, this Taiwan, Northeast China. So ये जो countries हैं यहाँ पे इसका origin माना जाता है. An important plant, and soybean is the important plant of vegetable oil and protein in the world. It is a good source of proteins. और इससे जो oil बनता है refined oil, that is also obtained from this pulse crop. This is the photograph which shows various soybean products, like we have soya sauce, roasted soybeans, chunks, soya paneer and refined oil, then other food items which are prepared from the soybean. And 40% of world's edible vegetable oil is obtained from soybean, and it contains 30 to 50% protein and 10 to 20% oil content, and it produces best quality proteins among the vegetable proteins. जो vegetable proteins है उसमें soybean जो protein है, that is the best quality protein. And soybean, that's why has been regarded as the golden bean or miracle bean. So ये कुछ एक sobriquets यूज किए जाते हैं soybean के लिए. Linnaeus named it glycine as the roots in one of the species are sweet. इसका जो जीनस का नाम ग्लाइसिन है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके किसी जो स्पीशीज है उसकी रूट स्वीट होती हैं. स्वीट मीन्स ग्लाइकोज, और उसी से ग्लाइसिन इसका नाम रखा गया है. And genus glycine is divided into two subgenres, which is glycine or soja. One is glycine soja, that is considered as the wild ancestor of glycine max. तो इसे जो ग्लाइसिन सोजा है, इसे ग्लाइसिन मैक्स जो हम कल्टीवेट करते हैं सोयाबीन, उसका एंसेस्टर माना जाता है. Next comes origin and domestication. As we have already discussed, it is considered as a native of East Asia, and there are no clear cut proofs. हमारे पास कोई ऐसे proofs नहीं है जिससे हम ये सर्टेनिटी के साथ कहें कि इसका ओरिजिन ईस्ट एशिया में हुआ है. जो ग्लाइसिन सोजा है विच अकर्स इन वाइल्ड स्टेट इन द सेंट्रल चाइना, जो सेंट्रल चाइना है वहाँ पे वाइल्ड स्टेट में ये ग्रो किया जाता है, एंड इज कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ डोमेस्टिकेटेड ग्लाइसिन मैक्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो दिस इज अ प्रोग्राफ विच शोज ग्लाइसिन सोजा. इट रीच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 17th सेंचुरी. ऐसा माना जाता है कि 17th सेंचुरी में इंडिया में पहुँचा है ये थ्रू पोर्तुगीज़ एंड डच ट्रेडर्स, and it reached in United States in 1804 and Africa in the late 19th century from China. So this is the distribution pattern in the world in some countries. It has now become a major crop in USA, Brazil, Argentina, India and China. So in countries में ये एक major crop है आजकल. Next comes morphology. Soybean is an erect, branched, bushy, coarse annual herb, herbaceous plant है ये, and it can reach up to the height of 1 to 2 meters. It has well developed root system which bear many lateral roots. ये जो root system है इसमें well developed होता है, और जो lateral roots होती हैं they bear this bead like structure जिन्हें हम कहते हैं nodules. और ये जो nodules हैं वो दोनों ही primary as well as secondary roots में बनते हैं, and their main function is in नाइट्रोजन फिक्सेशन. और जो राइजोबिया इन रूट नोड्यूल्स में रहता है, दैट इज ब्रेडी राइजोबिया जैपोनिकम. दिस इज द टिपिकल राइजोबियम
which lives in the root nodules of soybean, Bradyrhizobium japonicum, and is present in the nodules. This is the photograph which shows soybean plant. This is the uprooted plant, और इसमें जो root system है वो well developed है, primary roots भी हैं और secondary roots भी हैं, और ये show कर रहे हैं bead like structure जिन्हें कहते हैं nodules. When we cut these nodules, ये अंदर से थोड़े से reddish color के दिखते हैं. ये होते हैं reddish color के because it contains one pigment जिसे कहा जाता है lag hemoglobin, और जो lag hemoglobin होता है ये क्रिएट करता है ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट फॉर नाइट्रोजिनेज एंजाइम. जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसमें प्रेजेंट होता है दिस लैग हीमोग्लोबिन विच एब्सॉर्ब और विच मेक्स द ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट फॉर नाइट्रोजिनेज एंजाइम. Stem is vine-like, grey brownish or tawny, branched and covered with pale hairs. इसमें hairs होते हैं जो Next, leaves are large, alternate, stipulate and pinnately trifoliate. जो सोयाबीन के leaves हैं वो trifoliate होते हैं, means 3 leaves present होते हैं एक ही petiole पे. Each leaflet is broadly ovate, oval or elliptical to lanceolate. So इसकी जो shape है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ovate होती है, oval है, elliptic है या lanceolate है. Leaflets are also covered with fine hairs. इसके ऊपर भी बहुत सारे छोटे छोटे hairs present होते हैं which helps in protecting the plants from direct sun rays, और ये पानी के लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं. And if we talk about its inflorescence, जो सोयाबीन की inflorescence it is a short axillary raceme, racemose inflorescence होती है with compactly arranged 3 to 15 flowers. जो इसमें inflorescence है raceme है, it means जो youngest flower है वो टिप में होगा और जो oldest flower है वो बेस में होगा, और इसमें inflorescence में अरेंज हो सकते हैं 3 to 15 flowers. और जो इसके फ्लावर्स होते हैं दे आर वाइट, पर्पल कलर्ड, वाइट भी हो सकते हैं, पर्पल कलर्ड भी हो सकते हैं. टिपिकली पेप्लोनेशियस फ्लावर इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने चिकपी में पढ़ा था इन मॉर्फोलॉजी, एंड आर सेल्फ पॉलिनेटेड. इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है. दे आर आल्सो कवर्ड विद फाइन हेयर्स. तो इसके स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स सभी कवर्ड होते हैं फाइन हेयर्स से, और जो हेयर्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम वाटर लॉस, ताकि जो सनलाइट है डायरेक्टली प्लांट ऑर्गन्स के ऊपर फॉल ना करे. इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स करोला, इसमें होता है इसमें 5 सेपल्स होते हैं फ्लावर में, और इसमें होते हैं 5 पेटल्स. जो इंटीरियर मोस्ट पेटल होता है वो होता है लार्ज साइज का, जैसे स्टैंडर्ड और वैक्सिलम भी कहते हैं. द 2 लेटर वंस आर नोन एज पेलिया, और जो इसके अंदर होते हैं 2 पेटल्स वो फ्यूज्ड होते हैं, दे आर नोन एज कील. I have already discussed this Peperomyces corolla in a previous lecture. Then fruit is a pod. इसमें जो fruit है वो pod है, and its length is about 25 to 75 millimeter long, that we can see in this photograph. Next comes seeds. So इसमें 2 to 3 seeds present होते हैं per pod में. So this is the next comes area under cultivation. Maximum production of soybean is contributed by countries like United States of America, Brazil, and Argentina. They contribute nearly 80% of the total world's production. जो दुनिया में टोटल प्रोडक्शन होती है सोयाबीन के, उसका 80% प्रोडक्शन ये कंट्रीज करती हैं. दैट इज़ approximately 276 million tons of soybean, and this data is provided by FAO STAT Stat 2014. Next, it is also cultivated on large scale in India and China. China और India में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है इसकी. And in India, there is approximately 15 million hectares of land under soybean cultivation. और इसमें जो टॉप लीडर है, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, that is Madhya Pradesh, followed by Maharashtra and Rajasthan. These are the 3 major states, major soybean growing states in India, accounting for 90% of total production. जो 90% total production है इंडिया का, that is contributed by these 3 states. And this is a table which shows production wise hierarchy of states. इंडियन स्टेट तो मध्य प्रदेश इसमें टॉप करता है और प्रोड्यूस करता है 5.92 million tons of
soybean, then followed by Maharashtra, then Rajasthan, Telangana, Karnataka, Chhattisgarh, Gujarat, and other states. Total production है 11.48 million tons. Next comes cultivation practices. So firstly, climatic requirement. जो सोयाबीन है, this is a subtropical plant, means subtropical regions में ये especially grow करता है. Generally grown as a rainy season और खरीफ crop in India. इसे हम as a खरीफ crop grow करते हैं. जब मानसून आता है, rainy season होता है, तब हम इसे grow करते हैं. However, it can be grown as winter and summer season crop as well. हम इसे winter और summer season दोनों में ही grow कर सकते हैं. It can grow in all areas where moderate rainfall takes place. जहाँ पे moderate रेनफॉल होता है वहाँ पे हम इसे ग्रो कर सकते हैं, और जो टेम्परेचर रेंज है बिटवीन 10 to 35 डिग्री सेल्सियस. सो ऐसे एरिया जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है और टेम्परेचर रेंज रहती है 10 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे हम सोयाबीन की कल्टीवेशन कर सकते हैं. The next important requirement is soil. So it require well drained and fertile soil and are best suited for higher crop yield. So इसमें जो वेल ड्रेन्ड मीन्स जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है और फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं सॉइल में, दैट सॉइल इज़ बेस्ट suited for higher crop yields of soybean. And the soil pH should range from 6.06 to 6.5 for its optimum growth. So slightly acidic soil, we can say, is required for the cultivation of soybean. Then the important factor is the nitrogen fixing bacteria, that is Bradyrhizobium japonicum. It is the specialized rhizobium which is found in the root nodules of soybean. जो सोयाबीन के रूट नोड्यूल्स हैं उसमें ये वाला rhizobium specially found होता है, that is Bradyrhizobium japonicum in the soil, and it also helps in increasing the yield and as well as growth of the plant. Increasing yields are obtained year after year when the crop is grown on the same land for 2 to 3 successive years. तो हम जो yield है उसको increase कर सकते हैं successively अगर हम उसमें grow करते हैं for 2 to 3 successive years, because जो सोयाबीन के root nodules हैं they harbor this nitrogen fixing bacteria, और ये जो nitrogen fixing bacteria ये add करता है soil में nitrogen को, जो promote करता है plant की growth को. So that's why जब भी हम legumes को sow करते हैं किसी भी field में, आफ्टर दैट द अदर क्रॉप की जो yield है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज जो लेग्यूम क्रॉप्स हैं दे ऐड नाइट्रोजन कंटेंट, दे इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट कम्स सोइंग. सो सोइंग करने से पहले जो प्लोइंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. इसको हम या तो 2 और 3 ईयर्स में एक बार कर सकते हैं, या फिर हम हर सीज़न में हर ईयर में एक बार हम नॉर्मल समर प्लोइंग कर सकते हैं टू मेक द सॉइल गुड, जिससे कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो और सॉइल का जो पार्टिकल साइज़ है वो यूनिफॉर्म हो. देन फॉलोड बाय 2 to 3 क्रॉस हैरोइंग आर रिकमेंडेड टू गेट गुड टिल्थ एंड बेटर क्रॉप प्रोडक्शन. सो हैरोइंग एक स्पेशल मशीन होती है जो सॉइल के बड़े बड़े टुकड़ों को एक यूनिफॉर्म साइज़ में कन्वर्ट करती है, जिससे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है सॉइल, और सॉइल की लेबलिंग हो जाती है. एंड टू ऑब्टेन गुड टिल्थ, अच्छी सॉइल की क्वालिटी हमें ऑब्टेन होती है, दैट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसमें जो एरिएशन है वो अच्छे से हो पाती है टू गेट बेटर क्रॉप प्रोडक्शन. दैन सीड्स आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट जोन इन इंडिया. जो सीड सोइंग है वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइम में होती है इंडिया के, और जो टाइम जोन्स हैं वो लिस्टेड हैं यहाँ पे. फर्स्ट वी हैव नॉर्थ हिल जोन, जो हिली एरिया है नॉर्दर्न इंडिया का, उसमें लास्ट वीक ऑफ मई टू जून में सोइंग होती है. और जो नॉर्थ प्लेन जोन है उसमें मिड जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हम सोइंग कर सकते हैं. और जो सेंट्रल जोन है इंडिया की उसमें होता है मिडल जून टू मिडल ऑफ द जून टू द मिडल ऑफ जुलाई. सो जो मिड जून से लेके मिड जुलाई तक हम इसकी सोइंग कर सकते हैं. इन ईस्टर्न जोन जो टाइम पीरियड दैट इज़ मिड जून टू मिड ऑफ जुलाई, सिमिलरली जैसे दोनों में ही सेम फॉलो होता है ट्रेंड. इन सदर्न जून इट इज़ अगेन फ्रॉम मिड ऑफ द जुलाई जून टू एट द एंड ऑफ जुलाई. खरीफ क्रॉप की तरह इसको हम सो करते हैं in different regions of the India. Then first week of October to December as Rabi crop. अगर हम इसे winter season में go करना चाहते हैं, so the best time is in the first week of October to December as Rabi crop.
And second fortnight of January as summer crop. Fortnight means after 2 weeks, after the gap of 14 days. तो जनवरी में सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जनवरी में हम इसको शो करते हैं. In India, plowing is done with the traditional plowing method. जो traditional method करते हैं हम use plowing के लिए वो use किया जाता है. In Western countries they use some special machines like row seed planter or with seed drill machine जिसमें कि cups लगे होते हैं उसमें seeds को डालते हैं and वो जो machines हैं वो proper spacing पे seeds को sow करते हैं at a particular depth. In India जो seeds होते हैं they are sown through broadcasting method. Broadcasting method से sow करते हैं. I have discussed about this broadcasting method in previous lecture. Then seeds are sown at the rate of 80 to 90 kg per hectare. एक हेक्टेयर में 80 से 90 kg seeds को सो के आता है. और जो seed depth है that is 3 to 5 centimeter which is recommended in all the agroclimatic zones in India. तो इतनी डेप्थ में हम सीड्स को सो करते हैं. और सीड की इनोकुलेशन करते हैं मीन्स हम इसे इनोकुलेट करते हैं विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका कि हमें अलग से मटेरियल मिलता है. उसमें हम सीड को मिक्स करते हैं दैट इज़ ब्रेडिरोजोबियम जपोनिकम. इसके इनोकुलम में हम ऐड करते हैं सीड्स को और इसका जो रेशो रहता है दैट इज़ 500 grams in 175 kg ऑफ सीड्स. तो जो सीड्स हैं उनको हम इसमें इनोकुलेट करते हैं एंड वी कैन ऐड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एट द रेट ऑफ 500 grams पर 75 kg ऑफ सीड्स. तो ये रेशो रहता है एंड दिस सप्लीमेंटेशन और इनोकुलेशन विद जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये हेल्प करता है टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी कंसिडरेबली. Then we can treat the seeds with some fungicides like Thiram 75 and other fungicide in the ratio of 2:1 and can also be और इसका जो रेट रहता है दैट इज़ 3 grams per kg of seeds. तो 3 ग्राम हम इस केमिकल को यूज़ करते हैं इन पर kg of to treating 1 kg of seeds. Then we can do weeding. जो weeds हैं उनको रिमूव करते हैं with hands after 21 or 45 days of sowing. Days after sowing abbreviated as DAS or through the use of some weedicides. जो special weedicides उनको हम यूज़ करते हैं to which are helpful in obtaining the higher crop yields जिससे हम crops की maximum yield को obtain कर सकते हैं. Next important step is manuring. It is the process of adding the farmyard manure to the fields. It includes addition of farmyard manure at the rate of 10 tons per hectare. एक हेक्टेयर में 10 tons हम इसको यूज़ कर सकते हैं to get the higher crop production जिससे हम crop की higher yield obtain कर सकते हैं. The soil जो deficient होती है नाइट्रोजन में, phosphorus में, potassium में, so that require addition of this NPK in the ratio of 20, 60 and 20. That is nitrogen 20 kilograms, phosphate 60 kilogram and 20 kilogram of पोटाशियम. अगर हम 100 kg की बात करें तो उसमें ये रेशो रहता है NPK का. इसको यूज़ किया जाता है एज ए स्टार्टर डोज जब प्लांट्स जो है यंग स्टेज में होते ग्रोथ के until the formation of functional nitrogen fixing root nodules. अगर हम root nodule formation के बाद भी इसको ऐड करते हैं so it has negative impact on the crop जिससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं and they are unable to produce good quality seeds. नेक्स्ट कम्स हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग जो टाइम है सोयाबीन का ये रहता है विद इन 90 to 120 days एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कल्टीवार यूज्ड एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. तो दो फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं. वन इज़ कल्टीवार, हम कौन सी वैरायटी यूज़ कर रहे हैं सोयाबीन की, और दूसरा जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के वो कैसे हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कल्टीवार एंड क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. And the maximum range is in between 90 to 120 days for its maturation. The maturity of the seed is accompanied by falling of leaves. जब इसके plant से leaves गिर जाते हैं and stem dry हो जाता है then the plant is ready to be harvested. All the seeds on a single plant mature at essentially at the same time. जो एक plant पे जो seeds हैं वो सभी एक time पे ही simultaneously mostly mature होते हैं. The harvesting is done manually with the help of sickle that we have already discussed in previous lectures. In most part of India, otherwise we can use some advanced harvesting combines that we can see in this photograph. इस machine को भी हम use कर सकते हैं to harvest this matured soybean crop, and this method is mostly followed in developed countries, advanced countries. Next comes production. So maximum production is by
USA, that is 29%, followed by Brazil, then Argentina, India, and China, then other countries which contribute the lower percentage of production in the total production of soybean. So the main soybean growing countries are United States that we have already discussed, and Brazil, Argentina collectively contribute 81% of the world total production. The United States Department of Agriculture has predicted the global production of soybeans at 337 million tons in 2017-18. The average yield of soybean was 2.8 tons per hectare during 2016, and soybean production in India has increased to 14 million tons in 2016 from 10.3 million tons in 2014. So we have achieved the higher target in terms of production of soybean seeds. और जो 2016 था, that was also considered as year of pulse. So pulses की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमने जो 2016 था, that was considered as year of pulse. So this is the table that shows area under cultivation and output, that is production of soybean, that we have already discussed. Next comes some high yielding cultivars of soybean. So agriculture scientists, especially at IARI, that is Indian Agriculture Research Institute, and state farm universities and breeders at Indian Institute of Soybean Research, that is located in Indore, have developed many high yielding varieties which are also disease resistant varieties. So बहुत सारी ऐसे कल्टीवार ऐसी वेराइटीज़ प्रोड्यूस की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा yield प्रोड्यूस करती हैं, पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, और simultaneously they are disease resistant also. So in state-wise, we have in Andhra Pradesh, there are some varieties like MAUS 61, Puja, MOS 2, Pan Soybean, then Bihar PK4, 416, Pusa 16, Pusa 24. In Chhattisgarh, Ahilya 1, Ahilya 4, Indira Soya 9, then Gujarat Soybean 1, Gujarat Soybean 2, then Prabhani Sona, etc. In Haryana, we have Punjab 1, PK 416, Pusa 16, Pan Soybean. Then in Himachal Pradesh, we used to cultivate some high yielding varieties like VL Soya 2, VL Soya 47, Shilajit, Shivalik, Pusa 16, Hara Soya. Then in Jharkhand, Birsa Soybean, Ahilya 1, Samruddhi, MAUS 71. Then in Karnataka, we used to Bragg variety, Snake, KB 79, and Pant soybean varieties. Then in Madhya Pradesh, Ahilya 1, Ahilya 2, Ahilya 3, Ahilya 4. Then Maharashtra, we use Ahilya varieties, JS 335, then Prabhani Sona. So these are various varieties that we use in different states of India. In Punjab, like PK 416, Pusa 16, Pant soybean. And other states also used to cultivate these high yielding varieties which are disease resistant also. Next comes some diseases which occur in soybean. This table shows some diseases which occur in soybean and their causal organisms. So firstly is yellow mosaic disease. It is caused by mung bean yellow mosaic virus. It is a viral disease. Then next is soybean mosaic disease. It is caused by soybean mosaic virus. Then bacterial pustules, that is caused by Xanthomonas campestris. And Alternaria leaf spot, it is caused by Alternaria alternata. Then anthracnose, it is caused by Colitotrichum damasium. And brown spot disease, it is caused by Septoria glycines. And charcoal rot, it is caused by Macrophomina phaseolina. And collar rot, it is a disease which is caused by Sclerotium rolfsi. And frog eye leaf spot disease, it is caused by Cercospora sugina. So these are some diseases which occur in soybean and their causal organisms which causes these diseases in soybean plant. Next comes utilization of soybean. Soybean is a very important crop which is mostly cultivated for oil seed and as a source of proteins. Some of the uses which are listed below. Firstly, source of vegetable oil. So soybean is an excellent source of vegetable oil that we commonly call as refined oil. So soybean seed contain approximately 20% of oil, and 80% of total soybean production is processed into oil and soya meal.
सो 80% जो सोयाबीन है उसे यूज़ किया जाता है ऑयल प्रोडक्शन में और सोया मील प्रोडक्शन में. सो दिस इज़ द सोयाबीन ऑयल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द सीड्स. और ये जो सीड्स हैं ये कंटेन करती हैं 20% ऑफ ऑयल. द रिफाइंड सोयाबीन ऑयल इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज इंक्लूडिंग फ्राइंग, कुकिंग ऑफ vegetable or other food items. It is marketed both in liquid and partially hydrogenated form. तो दोनों ही फॉर्म में से मार्केट में यूज़ किया जाता है, सेल किया जाता है. Next comes soybean meal. So soybean seeds contain approximately 40% of protein and serve as very cheap source of protein. So बहुत ही एक cost effective source है ये protein का, and it is a good source of plant protein. It contains no cholesterol, low amount of saturated fat, and good level of fiber, zinc, iron, and calcium. So it is a rich source of nutrients. Also, soybean meal is principally used as a food and animal feed and serve as a good source of proteins that we have already discussed. Soybean chunks are prepared from soybean meal. Soybean chunks हैं वो बनते हैं इससे. Next comes cooked pulse. So soybean is also used as pulse. Soybean को हम as a pulse भी use करते हैं in various part of world including India. It is a good source of proteins, minerals and vitamins. So इसको हम as a pulse भी use करते हैं. Next, sprouted soybean. Soybean seeds are sprouted and eaten raw, which contains digestive proteins और बहुत ही rich source of proteins हैं. They are considered to have lot of health benefits. बहुत सारे health benefits होते हैं जो germinating seeds हैं, sprouted seeds हैं सोयाबीन के. And traditional foods include snacks. Roasted dry seeds हैं सोयाबीन के, they are used as snack. इसको हम as a snack यूज़ करते हैं. Then soybean chips are also available in the market. और सोयाबीन चिप्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल है. So these are some snacks which are used uh, for daily consumption by many people in the world, and they're prepared from soybean. Next comes health benefit. So soybean has various health benefits, like it helps in improving metabolic activity, helps in preventing cancer, helps to relieve menopausal symptoms, helps in improving bone health, helps in improving blood circulation, और ये help करता है weight gain करने में, and also improve heart's health. जो heart है उसकी health को improve करता है, and improves digestive health, helps in preventing birth defects and control the diabetes. So these are various uses of soybean. So this was all about for our today's discussion about soybean. If you found any difficulty and any questions and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day.